Hello everyone, welcome to PTE Reading Filling the Blanks Real Exam Question Series. This is 44th video in this series. It means we have already discussed 43 highly repetitive and real exam questions. So let's get started. First things first, now PTE is accepted in UK and 90% of Canadian universities now accept PTE Academic. And if you are applying for family visa, you can do it through PTE Home, which is a new test. My name is Bhrat Brij and I have scored a perfect 90 in all the 10 skills of PTE using the same strategies, tips and hacks which we teach you in this video series, and we have templates, working templates, strategies, hacks for all the 4 modules of PTE so that you can achieve your target score in first attempt. Yes, a lot of students of ours who take coaching from us get their target score in first attempt. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. So PT reading is of 32 to 41 minutes and आपको अपना time management खुद करना होता है because integrated timer होता है. It is not scored out of 90, it is scored out of 47 marks, and there are 5 question types in this. And today's video is about reading filling the blank, which is the second last question type in the order. And this is the real scoring of PTE reading module. So you can see the reading module just contributes 47 marks, and out of that 15 marks are for reading filling the blanks. So if you are getting 5 reading filling the blanks, they will be of 3 marks each. Okay, so that's why these are quite important. And what is the strategy? The first thing, as I said, that you need to do the time management yourself. The first thing जो आपको खुद करनी होती है is that you have to solve the reading filling the blanks in 2 to 2.5 minutes. Up 2 to 2.5 minutes में can you read all the words? Can you understand their meanings? The answer is probably no. So what you need to do is you need to do the skimming, and we teach to our students in detail how to do the skimming. So this is today's topic. As usual, I'm going to give you 30 seconds and then we are going to discuss it. Okay, so you know that now the first thing we are going to do is skimming, and in skimming we understand the tone, the tenses, as well as the gist. Tone positive tone है, negative है, neutral tone है और academic tone है. टेंसेस में कौन से टेंस यूज हो रहे हैं, पास्ट टेंस यूज हो रहे हैं, प्रेजेंट टेंस यूज हो रहे हैं या फ्यूचर टेंस यूज हो रहे हैं. एंड जस्ट इज ओवरऑल आइडिया. उसके बाद वी डू द पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लासिफिकेशन. बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू सॉल्व योर रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स. ओके, so first let's get started with the skimming. Children who skip school are increasingly on family holidays, government figures revealed today. Something children played truant this spring term compared with spring term last year. Children missed 3 million unauthorized days of school term last year compared with 3.7 days of school in the same period last year. Over here it's term, right? But a dash group of trons, 6% of the school population, who account for more than 3/4 of all those on unauthorized absence, are more likely to be on family holiday than they were in the same dash last year. Some 1.2% of all absence was for family holidays, not something by their school last term compared with 0.9% for the same term last year. More than 60% of absences were for illness, the same figure as last year. Okay, so इसमें कुछ अब ट्रॉन्ट एक कुछ vocab के लिए आपके वर्ड्स हैं. द ट्रॉन्ट इज वर्ड जैसे आप बंक यहाँ पे हम यूज करते हैं, स्कूल मिस करना अनऑथराइज्ड, सो उस चीज को हम ट्रॉन्ट कहते हैं. ओके, Plate traunt is the collocation.
राइट. सो यू ऑलवेज प्ले ट्रॉन्ट, एंड ट्रॉन्ट इज जब आप बंक करते हो, राइट. जैसे हम यहाँ पे अनऑथराइज छुट्टी ले लेते हैं, स्कूल वालों को बेसिकली पता नहीं होता, और विदाउट एनी information students are on leave. Okay, so over here, so if you see that now we have to start doing the parts of speech classification. More, ठीक है, more क्या है, comparative है, right. First of all, और साथ में it is used as an adjective. More water, more person. Less भी क्या है, comparative है. Fewer भी क्या है, comparative and adjectives हैं. Period, time period. Period is known as noun, और वैसे भी time की reference है. Hardcore. Hardcore, जैसे hardcore training, hardcore rules. So hardcore is going to be adjective. Agreed. Agree करना किसी चीज से, stay करना किसी चीज से, या lay करना किसी चीज पे. All these are verbs. So you have comparatives or adjectives, nouns, adjective and verbs. So let's get started with the first blank. Okay. So children. Children क्या है, आपका noun है. Okay. और नाउन से पहले अगर आपने हमारे ग्रामेटिकल लेक्चर्स अटेंड किए हैं तो नाउन से पहले क्या आएगा, आपका एडजेक्टिव आता है, राइट. सो अब यूजिंग प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन विच आई सेट एज आवर बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, यू आर गोइंग टू एलिमिनेट द रॉन्ग ऑप्शंस. कौन से, आप वर्ब्स एलिमिनेट कर सकते हो और नाउन एलिमिनेट कर सकते हो. तो अब आपके पास ये चार ऑप्शंस रहते हैं फ्रॉम विच यू हैव टू चूज योर आंसर. अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए, डिपेंडिंग अपॉन द फॉरवर्ड रीडिंग आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. क्योंकि स्प्रिंग टर्म लास्ट ईयर चिल्ड्रन मिस्ड 3 मिलियन अनऑथराइज्ड डेज ऑफ स्कूल टर्म लास्ट टर्म. लास्ट टर्म मतलब पिछली टर्म, जैसे समर टर्म, विंटर टर्म, कंपेयर विद 3.7 डेज ऑफ स्कूल इन द सेम पीरियड लास्ट ईयर. सो एक टर्म की बात हो रही है और एक उसी टर्म की लास्ट ईयर की बात हो रही है. पहले थ्री, इस टर्म में कितने हैं, 3 मिलियन. अब उसके बाद लास्ट ईयर में कितने थे, 3.7. तो क्या मोर हो रहा है, लेस है, या फ्यूअर है. सो द आंसर इज मोर तो नहीं हो रहे, लेस या फ्यूअर ही हो रहे हैं. नाउ अगेन योर ग्रामेटिकल नॉलेज, लेस किसके साथ यूज होगा, फ्यूअर किसके साथ यूज होगा. Fewer is used with countables and less is used with generally uncountables. Okay, like less money. Okay, so countables में अब आप compare कर रहे हो और आपका answer is going to be over here fewer. Okay, not less, right. So fewer children comparative हो रहा है, यहाँ पे comparison हो रहा है. Okay, so that's how you could find, क्योंकि आपका एक एडजेक्टिव भी है, यहाँ पे एडजेक्टिव आना था और साथ में कंपैरिजन है. फॉरवर्ड रीडिंग के बेसिस पे आपने देखा 3 और 3.7 में लेस मतलब फ्यूअर की बात हो रही है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. बट अ समथिंग ग्रुप ऑफ ट्रॉन्स. अब ग्रुप ऑफ ट्रॉन्स क्या है, आपका रहा एक तरह का नाउन है. सो नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा. ओके, एंड एडजेक्टिव में अ यूज हो रहा है तो कॉन्सोनेंट वाला एडजेक्टिव आएगा, वॉल वाला नहीं आ सकता. So now we are again going to do process of elimination. So we are going to eliminate our verbs, okay, and nouns. So अब आपके पास ये तीन ऑप्शन बचे हैं. But a more group of trons नहीं sense बनता. Similarly, less of group of trons भी sense नहीं बनेगा. So only answer which we are left with is hardcore group of trons. मीनिंग समझ आए ना आए, contextually समझ आए चीज ना आए, पर based on grammatical rules we have seen the answer for this one is going to be hardcore. Okay, moving on to the next one. अब क्या आपको ये सारे वर्ड्स पढ़ने की जरूरत है, जनरली द आंसर इज नो, बिकॉज यहाँ पे हम we read 3-4 words before the blank and 3-4 words after the blank. They were in the same dash last year. काफी easy है ये, and most of the students get this correct. Same period last year. टाइम की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम कंपैरिजंस की बात हो रही है. देखिए यहाँ पे भी टाइम कंपेयर कर रहे हैं, सो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टाइम कंपेयर. ओके, सो द आंसर फॉर दिस वन इज गोइंग टू बी पीरियड. मूविंग ऑन टू द लास्ट ब्लैंक. Some 1.2% of all absence was for family holidays, not something by their school last term. अब एक सिंपल सी बात है, जो ऑप्शंस बचे हैं, जस्ट लेट्स पुट देम. नॉट मोर बाय देयर नहीं सेंस बनेगी, लेस बाय देयर नहीं सेंस बनेगी. एग्रीड बाय देयर स्कूल लास्ट टाइम, यस. स्टेड, स्टे क्या होता है, किसी चीज को रोकना, राइट. जैसे कोई चीज जैसे पड़ी हुई है, जैसे आप कहते हो कि उसको चीज को रोकिए,
आप नोटिस के ऊपर स्टे लेते हो, पर यहाँ पे आप स्टे वाली बात नहीं कर रहे हो। ले क्या होता है? लेटना, वो भी नहीं हो सकता। So the only answer is going to be agreed, not agreed by their school last term, right? So let's see if all the answers are correct or not. Yes, all the answers are correct. So you see how easy it can be अगर आपको ग्रामर रूल्स याद हैं, यहाँ पे अगर आपको पता है एडजेक्टिव आना है, यहाँ पे आपको पता है एडजेक्टिव आना है, और एडजेक्टिव के साथ यू नो कि यहाँ पे काउंटेबल्स आने हैं. सो इट विल बी easy for you to solve reading filling the blanks. So what is our strategy? Our strategy is based on three things. First is context, second is lexical resource, and third one is grammar. Context में we do first skimming, then forward reading, backward reading, and tone analysis. In lexical resource we go for collocation, phrasal verbs, and vocabulary, right? So today you had seen the importance of forward reading. हम अपने answers comparisons वाले more less fewer वाले answer उसी basis पे choose कर सके forward reading के basis पे. बैकवर्ड रीडिंग के बेसिस पे हमें पता चला कि हम टाइम पीरियड को कंपेयर कर रहे हैं. सो यू सी हाउ इंपॉर्टेंट दीज स्ट्रैटेजीज कैन बी. कमिंग टू द ग्रामर पार्ट, for grammar we have a complete grammar course. Parts of speech, you have seen the uses of parts of speech: subject verb agreement, prepositions, modals, articles, determiners, signposting words, tenses, irregular verbs or plurals, then British English rules and sentence formation. All these things we teach to our students in detail. Now always remember you have 2 to 2.5 minutes to solve your reading filling the blanks. In first 30 to 60 seconds you have to skim the content, then you have to do the parts of speech classification like we do, and in next 90 to 120 seconds you have to use the process of elimination, use the grammar strategies to solve your reading filling the blanks. And all the strategies which we teach are validated and proven strategies. The proof is in the ticker below. So many students of ours have achieved their target score. If they can achieve, you can also achieve. And some of our recent success stories where students have scored 90, 87, 86, 82, and 81. So if they can score, you can also score. This is our WhatsApp number 8699121121. You can WhatsApp us if you want to take online coaching or in-institute coaching. And do not forget to subscribe to our channel because we post such informative videos on a regular basis. We give wings to your dreams.